Welcome to one more session of maths, and we are learning maths in standard 8, and we are discussing the parallelograms in chapter number 3. Okay. Now parallelograms. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides in both pair of opposite sides are parallel. Okay. So parallelogram is a type of quadrilateral in which sides in both the pair of opposite sides are parallel to each other. Look at it. This is ABCD quadrilateral, and if you produce side AB, side DC, see, you can see that AB seems to be parallel to DC, and similarly if you produce side AD and side BC, it seems to be parallel to each other, and if it is produced so long, it is the sides are not going to intersect each other, means both this pair of opposite sides are parallel, and that's why this one is a parallelogram. Look at it in PQRS also. If you produce side PQ and side RS, okay, they are parallel, and side PS and side QR. So it seems to be parallel, and that's why both the pairs of opposite sides are parallel. This one, if you produce side LM and ON, they are not going to intersect each other at any point. And if you produce LO and MN, and these two sides are also not going to intersect if it is produced for long. Okay, so these are parallelograms. Both the pair of opposite sides are parallel. But look at this. Look at this. Here AB is parallel to DC, but AD doesn't seem to be parallel to PC. Okay, so one pair of opposite sides are parallel, but the other sides in other pair of opposite sides are not parallel. Okay, look at it here. Not a single pair of opposite sides are parallel. Okay, look at it. Here it seems to be parallel, but my friend, this is not a quadrilateral. This one is hexagon. So these are not parallelograms. Okay, and these are parallelograms because they are quadrilateral in which sides in both the pair of opposite sides are parallel to each other. Okay, very good. Now elements of parallelogram. See, this is a parallelogram A, B, C and D. So elements include sides and angles and diagonals. Look at it. Line segment AB, line segment BC, line segment CD and line segment DA are four sides of parallelogram ABCD. So it can be four sides of any quadrilateral. Okay, out of which AB, line segment AB and line segment CD. Look at it. AB and CD. These two line segments, and AD and BC. These two line segments are two pair of opposite sides. So line segment AB and line segment CD is one pair of opposite sides. Line segment AD and line segment BC is the another pair of opposite sides. So there are two pairs of opposite sides in parallelogram, not just in parallelogram, in any type of quadrilateral, these elements are there. Okay, so four sides out of which
there are two pairs of opposite sides in any type of quadrilateral. Now look at it here. This is out of which line segment AB and BC, look at it, line segment AB and BC, line segment AB and BC is first pair of adjacent sides, पास वाली side यानी adjacent side. Line segment AB and line segment BC is one pair of adjacent side. Then line segment BC and line segment CD, this is the second pair of adjacent sides. Then line segment CD and line segment DA, this is the third pair of adjacent side. And line segment DA and line segment AB, this is the fourth pair of opposite adjacent sides. So there are four pair of adjacent side in parallelogram and in any type of quadrilateral. Okay, now angles, okay, we are discussing of angles. Now it's angle A and angle C, look at it, angle A and angle C is one pair of opposite angles, and angle B and angle D is the second pair of opposite angles. So angle A and angle E forms one pair of opposite angles, angle B and angle D forms second pair of opposite angles. So there are two pairs of opposite angles in a parallelogram or in any quadrilateral. Okay, and four pair of adjacent angles, pass wala angle A and angle B is the first pair of adjacent angle, angle B and angle C is the second pair of adjacent angles, angle C and angle D is the third pair of opposite angles, adjacent angles, and angle D and angle A is the fourth pair of adjacent angles. And two line segment AC, line segment AC and line segment BD are two diagonals, and as we know that it's a convex quadrilateral, diagonals intersect each other. Okay, so AC and BD are two diagonals. So these are the elements of parallelogram. Now properties of parallelogram. So we have to learn some properties of parallelogram and discuss on it, and we have to solve some questions in exercise 3.3 related to this property of parallelogram. See, this is parallelogram ABCD. See, AB and CD are one pair of opposite sides, AD and BC is the second pair of opposite side, AB and BC is adjacent side, BC and CD is a pair of adjacent side, CD and DA is a pair of adjacent side, and DA and AB is also a pair of adjacent side. You can see that AC and BD are two diagonals. Okay, now the first property is that the opposite angles of a parallelogram are of equal measure. Opposite angles of a parallelogram are of equal measure. So parallelogram के जो opposite angle है उसका measurement same होता है. See, A and C, angle A and angle C is one pair of opposite angles. So their measurement will be same, and B and D is the other pair of opposite angles, and measurement of angle B and angle D will be same. Okay, so now the second property, the opposite side of a parallelogram are of equal length. So opposite side है वो equal length की होगी. Okay, ऑपोजिट साइड है वो इक्वल लेंथ की होगी. समझो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी. ओके, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर. ओके, सो ऑपोजिट साइड मीन्स ए बी एंड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू
BC। यहाँ पे भी देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, और ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टीज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, the adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Supplementary angle यानी जो दो एंगल का सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो adjacent angles of a parallelogram, so there are 4 pair of adjacent angles, एंगल A and B वो भी सप्लीमेंट्री हो गए, यानी एंगल A प्लस एंगल B, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। B and C is the other pair of adjacent angles, so B एंगल और C एंगल का सम B, मेजर का एंगल B, सम ऑफ एंगल्स B 180 होगा। एंगल C एंड एंगल D इज द थर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो दोनों के मेजर का सम 180 होगा, एंड D एंड A विल ऑल्सो बी ऑफ 180 डिग्री इफ दे आर एडेड। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। C और D दोनों एंगल का सम मेजर ऑफ एंगल्स 180 होगा, और D और A दोनों एंगल का मेजर B, sum of measure of angles will be 180. Okay, so adjacent angles of a parallelogram are supplementary. And the fourth one, the diagonals of a parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे जो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ दोनों का मिड पॉइंट होता है, दोनों का मिड पॉइंट होता है। सो डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों के मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों के सेम दो दो टुकड़े होते हैं। ओके, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. So we can say that OA is equal to OC, OA is equal to OC, and OB is equal to OD. So OB is equal to OD. Okay, so these are the 4 properties we have to learn, we have to discuss, we have to keep in mind, and we have to solve the exercise 3.3 using these properties. Okay. Now exercise 3.3, question number 1, given a parallelogram ABCD. So we are given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. Okay, so हमें ये आंसर भी लिखना है, और ये आंसर हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये दे रहे हैं ये भी हमें बताना है। ओके, नाउ लुक एट इट, वी हैव 4 प्रॉपर्टीज, वी हैव 4 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, then property number 3, adjacent angles in a parallelogram are supplementary, and the property number 4, diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay, now here we will complete the answer using this property. Okay, and we have to mention the property or write the property in short as we have written here. So AD is equal to, now what is AD? AD is a side of a parallelogram, यानी AD के बराबर कौन सी साइड होगी? तो होगी BC। AD इज इक्वल टू BC, और ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लिखेंगे?
opposite sides are equal. So property number 1, opposite sides are equal in a parallelogram. Okay, in a parallelogram, which is understood. Now angle DCB. What is the property of angle? See, opposite angles are equal. This is the property. So angle DCB is angle C in short. So DCB will be equal to BAD or DAB. So we can write it's a BAD. So angle DCB is equal to angle BAD. Angle C is equal to angle A, and angle A can be written as BAD. Its opposite angles are equal. Okay. Then OC, look at it, OC is equal to what? Okay, we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, means O is the midpoint of AC as well as of BD. So if O is the midpoint of AC, then OA will be equal to OC. OA is equal to OC. So OC is equal to OA, and the property used here is diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Okay, and the last one, angle DAB plus measure angle CDA. Angle DAB means this angle, and angle CDA means this angle. So these two angles are adjacent angles. So sum of two adjacent angles is equal to how much? So parallelogram में दो adjacent angle है वो supplementary होते हैं और उसका total 180 होता है. So we can write that adjacent angles are supplementary. Okay. Are supplementary. Okay, very easy my friend, very easy this exercise is. Now question number 2, consider the following parallelograms, find values of unknown x, y and z. So this is a parallelogram, and we have to find the values of x, y and z. So these are the three measurement of angles of a parallelogram. Now you can see that angle B is of 80 degree and y is the measurement of angle D. So y, D and B are opposite angles, and opposite angles are equal. So here y is equal to 80. Y, it's opposite angles. Opposite angles of a parallelogram are equal. That's why y is equal to 80. Now x and y are adjacent angles. These two are measurement of adjacent angles, and adjacent angles are supplementary. Okay, so we can write that x plus y is equal to 180. They are adjacent angles. Okay, so x plus 80 is equal to 180. So x is equal to 180 minus 80. Therefore x is equal to 100. Okay, and now you see that it's 100 and this y is 80. Now only one left, that is z. So z
is equal to x, because z and x are the measurement of opposite angles. Okay, so here z is equal to x. Why? They are opposite angles. Okay, so z is equal to x and value of x is 100, so z is equal to 100. Okay, very good. Now in question number 3, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? If अगर नीचे दी गई हुई कंडीशन है तो कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम बन सकता है क्या? फर्स्ट रोमन इज दैट, फर्स्ट कंडीशन इज दैट एंगल D plus angle B is equal to 180. Okay, see in a parallelogram adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. So पास वाले दो एंगल का सम ऑफ एंगल्स 180 होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑपोजिट एंगल्स है D एंड B, यानी ऑपोजिट एंगल का सम 180 है. सो ये कंपलसरी नहीं है. लेकिन सी इफ दिस टाइप ऑफ पैराग्राम, दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, दिस वन इज opposite angles are equal and both of 90 degree, then it can be angle D plus angle B is equal to 180. So दोनों का सम 180 हो भी सकता है, दोनों का सम 180 नहीं भी सकता है. So it can be okay, it can be parallelogram but need not be. ओके, ये दोनों का सम 180 हो भी सकता है और जिस दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है, लेकिन दोनों का सम ऑपोजिट एंगल का सम 180 होना कंपलसरी नहीं हो तो भी हो सकता है. सो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही हो. ओके,
Now, in the question number 2, AB is equal to DC is equal to 8 semi. Look at it. If it is an parallelogram, then AB is equal to DC is equal to 8 semi. So, opposite side, one pair of opposite sides are equal. But look at it. AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. So, for this triangle to be a parallelogram, opposite side must be equal. So, look at it. AD is not equal to BC. So, no, it is not a parallelogram because here AD is not equal to BC और AD और BC सेम नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम इतना मेजरमेंट वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. नाउ थर्ड वन, एंगल A is equal to 70 and angle C is equal to 65. A is equal to 70 and C is equal to 65. ओके, ये पैरेललोग्राम बनने के लिए ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए. सो इट कैन नॉट बी, नो, बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C. नहीं दिया गया है, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. So हमें एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन उसके ऑपोजिट एंगल की एक पैर but has exactly two opposite angles of equal measure. Opposite angle की एक पैर है वो equal measurement की है. ओके, सो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रफ फिगर बना रहा हूँ. See, look at it, this one. ओके, opposite angles. Now मुझे एक एंगल बनाना है, ये यहाँ से A एंगल मैं 70 डिग्री का बनाता हूँ, 70 डिग्री का. ओके, हियर इट इज A और मुझे 70 डिग्री का बनाना है. सो यहाँ पे ओके, सो ये 70 डिग्री का एंगल बन गया A. कितने मेजरमेंट का? 70 डिग्री का A. और यहाँ से मुझे दूसरा एंगल बनाना है. ये मैं कोई भी मेजरमेंट का बनाता हूँ, ओके, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे C एंगल, ये B है और ये C एंगल मुझे 70 डिग्री का बनाना है, तो उस पे भी मैं 70 डिग्री का बनाता हूँ. ओके, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. तो ये मैं 70 डिग्री का बनाता हूँ. सो ये एक रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें A 70 डिग्री का है, B एंगल, C एंगल भी 70 डिग्री का है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि दूसरी ऑपोजिट एंगल की पैर है वो डिफरेंट मेजरमेंट की है. सो ये 90 डिग्री की है और ये 130 डिग्री की है. ओके, सो ये एक रफ फिगर है क्वाड्रिलेटरल की जिसमें ऑपोजिट एंगल की एक पैर है वो इक्वल है लेकिन दूसरी पैर इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम तो नहीं है. ओके, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2.
ओके, सो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2 है. सपोज दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी और उसके एडजेसेंट एंगल, एक पेयर एडजेसेंट एंगल की ए और बी दोनों का मेजर का रेशियो 3:2 है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, नाउ इस पैरेललोग्राम की एक एडजेसेंट एंगल की एक पेयर हम ए और बी को लेते हैं, उसका मेजर का रेशियो 3:2 है. सपोज सो लेट ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2 एंड देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x. हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि रेशियो 3:2 है तो उसका मेजरमेंट 3x ले सकते हैं, उसका मेजरमेंट 2x ले सकते हैं. नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Okay, adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So A means 3x plus 2x is equal to 180. That is 5x is equal to 180. So x is equal to 180 upon 5. So x is equal to 36. Okay, and therefore angle A is equal to 3x, 3 into 36 is equal to 108. 36 3 is 108. Angle B is equal to 2x is equal to 2 into 36, that is of 72. यानी A एंगल हमारा हुआ 108 का, ओके, और B एंगल हमारा हुआ 72 का. अब हमें फाइंड करना है एंगल C and angle D. Now C is the opposite angle of angle A. Okay, so here C is equal to angle A because opposite angles. Okay, so angle C is equal to A is equal to 108 and angle D is equal to angle B, again opposite angle. So angle D is equal to angle B and angle B is of 72 degrees. So angle D is of 70 degrees. Okay, so this is how we are able to find the measurement of all the 4 angles. Angle A is of 108 degree, angle B is of 72, angle C is of 108 and angle D is of 72. Okay, very good.